So very good morning everyone. In this video I am going to discuss about digital tools in Human Ethics Committee and how much helpful these tools particularly during these pandemic situations. As you all know, these pandemic situations has affected almost all the areas including clinical trials. And with respect to clinical trial, it's very difficult to start a new clinical trial in this pandemic. Very difficult to recruit a subjects in a clinical trial. It's very difficult to maintain the volunteers or subjects who are already involved in a clinical trials. There are many dropouts or withdrawal of subjects. So very difficult to complete ongoing trials and very difficult to start a new clinical trials. So how these digital tools could help in Human Ethics Committee, how much helpful these are. These I am going to discuss some of the points related to this. So regulatory authorities or human ethics committees now are going to take a e-consent from the participants. Uh, E-consent, as you know, consent is a process by which the subjects or volunteer take their own decisions whether they want to participate in that particular trial or not after all the understandings about the procedure of the trials, possible complications, possible benefit, possible harmful effects. So these consents, these e-consent process can be done through electronically also. The clinical research coordinators can demonstrate or can explain all the things related to the studies to the participants, and that video through video conferencing, and that video can be recorded, and they after understanding all these things, the participants can decide whether they would like to participate or not. So consent can be taken electronically. There is another part is electronic ethics committee. Electronic ethics committee means every human ethics committee members will get a username and password. They have to log in, and after that they will receive the protocols for the reviewer process. Earlier, the member secretary of Human Ethics Committee circulating these protocols through hard copy, through speed post, but through electronically, you will receive these protocols, and that Human Ethics Committee's persons can review, and meetings can also conducted through a virtual mode. So member of ethics committee are able to work. The major advantages is of this is they can work quickly, and many times practically when we would like to conduct a human ethics committee, it's very difficult to fix a date where all the members are available. Sometimes members are outside the country, sometimes they are out of station also. So due to this electronic ethics committee, they can join from anywhere, whether they are in India or outside India, or whether they are any other part. So every members could join electronically. That is one of the major advantage which I feel. Another advantage is paperwork is less, and there is a quick if there is any changes is required. So electronically they can submit their recommendations if there are changes. After making all these recommended changes, that investigator can also submit these changes electronically, and again it can be reviewed. So review process will be fast through electronically. Uh, what problems with the digital tools which can be faced is related to training of particularly these login IDs, or particularly these softwares by which you will conduct this meeting. Maybe the experienced members of human ethics committees are more not comfortable with these online mode. Another thing is uh, still most of the members of human ethics committee or any committees are more comfortable with hard copies instead of soft copies, because to review a document more carefully, hard copies are much more useful as compared to electronic copies. So that are the technical problems, and I hope slowly and slowly these problems will also resolve. We have to be adapt to the soft copies or these electronically mode much more, so it will do the fast review process.
So this is regarding digital tool in human ethics committees. How much helpful? If I explain little bit in Hindi, तो ई कंसेंट का मीन्स नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट, जो कि हम कंसेंट लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स का, पार्टिसिपेंट्स का, कि आपको पार्ट लेना है उस पर्टिकुलर ट्रायल में और नॉट। तो क्या होगा कि वर्चुअल मोड के थ्रू आप सब्जेक्ट को सारा एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि ये स्टडीज है, इसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं, ये हम दवाई देंगे, इससे ये भी हो सकता है, वो भी, जो हम कंसेंट प्रोसेस, इनफॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स अपना कंसेंट इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकता है कि उसको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक इथिक्स कमेटी जो मीटिंग हम अटेंड कर सकते हैं थ्रू वर्चुअल मोड। इथिक्स कमेटी के मेंबर्स को अपना लॉग इन पासवर्ड मिल जाएगा, जहाँ पे पेंडिंग कोई प्रपोजल है रिव्यू करने के लिए, वो अपना रिव्यू करके इलेक्ट्रॉनिकली उसको सबमिट कर सकता है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी जल्दी भेज सकता है। और इन्वेस्टिगेटर भी अपना जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो भी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकता है। तो ये सारा प्रोसेस फास्ट फास्ट हो जाएगा। मेनली प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब आप मीटिंग कंडक्ट करते हो या डेट डेट लेते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सभी मेंबर सेम डेट पे अवेलेबल हो, क्योंकि हर मेंबर्स की अपनी कमिटमेंट है, बिजी हैं। कुछ मेंबर्स बाहर हैं, वो पर्सनली आ नहीं सकते। तो मुझे जो लगता है सबसे मेजर एडवांटेज वही है कि आप चाहे कहीं भी हो, आप इलेक्ट्रॉनिकली जुड़ सकते हो, आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग, कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंगली आप कहीं से भी जुड़ सकते हो जिससे कि हमारी ह्यूमन एथिक्स कमेटी जल्दी मीन्स क्विकली काम कर सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेनली ह्यूमन एथिक्स कमिटीज में जो मेंबर्स होते हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स। सो वो उनको डिफिकल्टीज होती हैं कई बार। आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है इंटरनेट का, कई बार जो मेंबर है वो कंफर्टेबल नहीं है मीन्स का लॉग इन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे करना है, कैसे रिव्यू करना है डॉक्यूमेंट, ट्रैक चेंजेस कैसे करना है। तो वो सब के लिए ट्रेनिंग अगर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी मेंबर्स को तो हम इसको कर सकते हैं। हार्ड कॉपी, ये एक प्रॉब्लम है कि आई एग्री कि हार्ड कॉपी जो होती हैं वो रिव्यू करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी मीटिंग हो, आप अगर आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी तो यू कैन आप उसको इवेल्युएट अच्छे से कर सकते हो, रादर देन इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में आप स्क्रॉल करते गए काफी चीजें मिस हो जाती हैं। तो हार्ड कॉपीज का एक इशू है। तो आई थिंक हार्ड कॉपी हम स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, पर मीटिंग्स हम ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। तो आई होप you get an idea so how digital tools could help in these human ethics committee. Thank you.